अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में प्रिजनर ऑफ जेंडा के पास्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं हम लोगों ने। सेक्शन बी के क्वेश्चन करवाए हैं। देन उसके बाद मैंने कहा था कि अब जो वीडियो मैं डालूँगी उसमें प्रोज एंड पोएम के क्वेश्चन कंप्लीट करके देन सेक्शन सी प्रिजनर ऑफ जेंडा के क्वेश्चन हम करेंगे। तो द डे द डैम ब्रोक पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। Question number 1, how did the panic start in the cinema and high street? The main causes of panic was nothing but the behavior of the people based on mass psychology. All of a sudden, someone started running when everyday business in busy city of Columbus was full of swing. When a man who had met his wife at Marmar Hotel, so his feeling was running because he was so late than a newsboy and another people main of affairs started to run into the east side. An old lady, she was always feared for drown, and the newsboy cried due to the electric sound and traffic that the dam had go broken. To the east side in this way, within 20 minutes, these affairs spread all over the city and almost 2,000 people started to run and go to east side from the river was the slogan of everybody. 2014 का क्वेश्चन गिवन है, how did Thurber's mother cope with the situation in the day the dam broke? According to the James Thurber, his mother did not lose their sense and courage. She all out of fires. She took a dozen of eggs and 2 loaves of bread. It was her plan to go a memorial hall. She took 2 blocks away and take refuge everywhere from the top of it. In this way, she coped with the situation that across with the rumor of the break of dam. Another question, how long did the panic last and how was ordered in the story the day the dam broke? James Thurber has given the description to maintaining the discipline in the city. The panic last 2 hours spread all over the city, and military men announced in the motor lorries through megaphones that the dam had not broken and there is no danger to anyone. In this way, the people reach 4 to 12 miles, and after these they come back to original position places. अच्छा, यहाँ पर जो लोग इस साइड की तरफ भाग रहे थे, ये जस्ट र्यूमर की वजह से ये लोग भाग रहे थे। और जब इन लोगों को पता चला कि ये सिर्फ एक र्यूमर है, हकीकतन ये कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तो ये लोग खामोशी के साथ वापस आ गए। किसी ने उस वक्त किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि तमाम लोगों ने एक साथ ही ये बेवकूफ़ी की थी। Another question, what do you learn about human behavior from the day the dam broke? I have learned about the human behavior from the day the dam broke, that people were not confirmed about the incident surely, but they following each other and create a panic situation. Nobody bothered to reach the reason or evidence to get the truth. द डे द डैम ब्रोक के हमारे पास पेपर में ये 4 क्वेश्चन गिवन थे जो हमने कवर किया है। देन अनदर चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट। 2018 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड इन द हिस्ट्री डू यू यूरोपियंस कॉल द डार्क एजेस? अच्छा, वेस्टर्न हैड डोमिनेशन बोथ इन पावर एंड कल्चर बाय द राइज ऑफ ग्रेस, but their domination when the war between Romans and German would succeed in this war. The domination of the West meet at the end of the fall of Rome. Europeans called these era the Dark Ages. What does Bertrand Russell consider industrialization a condition of survival in the modern world? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन गिवन है 2017, 15 एंड 10 का, वाई डज बेटरन रशियल कंसिडर इट यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन?
Bertrand Russell considered it is useless to resist industrialization because it's the source of superiority, and those who lag behind have difficulty in preserving in their independence. Author not only considered the industrialization a condition of survival on the modern world, but also a way to presence of independence. Another question, what is the author opinion should Asian countries should accept from the West and what should they reject? 2016, 13, 12, 11 and 14 का ये क्वेश्चन है. एक और तरीके से पूछा गया है, what advice does Bertrand give Eastern nation? According to the author, what Asian accept from West is the science and technology, as it was the era of industrialization, so they must not lag behind. But one thing should Asian rejected is that West used science and technology in the preparation of the war. रिफ्लेक्शन एंड द रे ऑफ वॉकिंग ईस्ट के क्वेश्चन भी इतने ही हैं जो पास्ट पेपर में गिवन थे, उसके आंसर कर लिए हमने. एंड अनदर चैप्टर इज़ द सॉलिटरी रीपर्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. 2017 का क्वेश्चन गिवन है, मेंशन द थिंग्स दैट इंस्पायर्ड द पोएट टू राइट द सॉलिटरी रीपर. व्हेन सॉलिटरी रीपर singing a song, Wordsworth was getting inspired, although he was unable to understand the language of the song. But he was too involved in it that he expressed his feeling by saying that the lyrics of the song always remains in my heart. ऑथर ने ये कहा था कि ये अल्फाज ऑथर को समझ में तो नहीं आ रहे थे कि वो कौन सी अल्फाज में गाना गा रही है, लेकिन जो लिरिक्स थे वो कभी भी उसको, वो ऐसे लिरिक्स थे कि कभी भी ना भुलाए जाने वाले. And the next question, describe the incident that inspired Wordsworth to write Solitary Reaper. 2015, 14 and 13 का question है ये. The song was too pleasant and endless. Poets say that it has been now saved in my memory and I could not forget ever. The song was too good that Wordsworth wrote a poem on the solitary maiden girl describing the quality of her song. उसने दरअसल ये पोएम लिखा ही इसीलिए था कि वो इसके गाने की क्वालिटी और उसकी खूबसूरती और जो उसके खूबसूरत अल्फाज जो दिल में उतर जाने वाले थे उसकी क्वालिटी को वो इस पोएम के ज़रिए बयान कर सके. अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ गेस अबाउट द थीम ऑफ गर्ल सॉन्ग इन द पोएम द सॉलिटरी रीपर. 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. गर्ल वॉज सिंगिंग इन सम अदर लैंग्वेज, देयरफॉर वर्ड्सवर्थ unable to understand in it, but he had a guess that her song was melancholy and singer may have faced any loss or pain. तो हमारे पास ये वाले इसके सॉलिटरी रीपर के क्वेश्चन जो 3 गिवन है पास पेपर में, ये उसके आंसर्स हैं. देन एक और चैप्टर कर लेते हैं आज, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय राना लियाकत अली ख़ान. 2018 का क्वेश्चन गिवन है जो 2 तरीके से पूछा गया है. द व्हाट इज़ द जेन्युइन फीडिंग अकॉर्डिंग टू द लियाकत अली ख़ान, और व्हाट डज लियाकत अली ख़ान स्टेट द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर द कॉमन मैन टू बी. हेडिंग, लियाकत अली ख़ान डिस्कस्ड अबाउट द रियल freedom or genuine freedom meaning at great length. He concluded about few words, the real or genuine freedom meanings when the people free from their basic needs, poverty and disease and other vice, freedoms from only foreign domination. It was no importance and benefit for masses. Question number 2, what is the meant by synthesis according to the लियाकत अली ख़ान. 2019 का क्वेश्चन है. The word synthesis mean which is act as a combination state of separate state, belief, styles or things. The idea is given by लियाकत अली ख़ान to have firm faith in Islam and acquired modern technology as well. Question number 3, our administrative machinery had to be built from scratch. What does लियाकत अली ख़ान mean by their
वर्ड्स। 2015 का क्वेश्चन है ये। टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सिग्निफाइज फ्रॉम द बिगिनिंग विदाउट एनी हेल्प एंड एडवांटेजेस। द सेंटेंसेस देयरफॉर मीनिंग दैट व्हेन द Pakistan came into the existence, they don't have